कैसे बोल रहे हैं? अच्छा ध्यान का छोटा सा रिफ्लेक्शन है। अनिच्छ संज्ञा अजान अमरों ने पिछले महीने ही दिया मेंटल रिट्रीट में। उड़छन पालन के लिए किसी पूर्व पर उतना ही पढ़ो छोटा इन पता तेरे मॉर्निंग चैंटिंग पेज 2 हिंदी बुक। यो सो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाखतो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो स भगवतो साकसंघो तमयं भगवन्त सधम्मं ससंघम् इमे सकारे यथा आरोपिते अभिपूजयाम साधुनो पश्चिमानतानुकम्पमानसा इमे सकारे दुगतपणाकार भूते पटिगह्णातु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा खातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। हन्तमयं बुद्धस्य भगवतो उपभाग नमकारं करोमसि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अब त्रिरत्न वंदना करेंगे पेज 7। हंदमयम रतन तय प्रणाम गाथा यो चीव संवेग परिकीर्तन पाठन च भणामसि बुद्धो सुशुद्धो करुणामहन्नवो योचन्त शुद्धवरज्ञानलोचनो वन्दामि बुद्धं अहमानेन तं धम्मोपदीपो नियतस्य
सत्तुनो यो मग पाका मत भेद भिन्नको लोकुत्तरो यो च तत्तदीपनो वन्दामि धम्मम् संघो सुखेत संहितो यो दिक्ख संतो सुगत बोधको लोलपयिनो हरि सुमेधसो वन्दामि संघम् आदरितं पुण्यं मया यम मम सब पद्दवा माहोन्तु ते तस्य स्वभाव सिद्धिया इह तथागतो लोके उपन्नो अर्हं समासमितो धम्मो च देशितो नियानिको उपसमिको परिनिब्बानिको संबोधगामि सुगतपवेदितो मयं तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानामः जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं शोक परिदेव दुःख दो मनस्य उपायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यमपीच्छं न लभते तमपि दुःखं संकीर्तेन पंच उपादान कंदा दुःखा सेयतीदम् रूप उपादान खंदो उपादान खंदो संज्ञा उपादान खंदो संस्कार उपादान खंदो विज्ञान उपादान खंदो ये सब परिन्याय धर्मानु सुभगवा एवं बहुलम सावके विनीति एवं भागा च पनस्य भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला पवत्तति रूपम अनित्यम वेदना अनित्या संज्ञा अनित्या संखारा अनित्या विज्ञानम अनित्यम रूपम अनित्या वेदना अनित्या संज्ञा अनित्या संखारा अनित्या विज्ञानम अनित्या सब्बे संखारा अनित्या सब्बे धम्मा अनत्ताति ते मयं ऊतिनाम जातिया जरा मरणेन शोके हि परिदेवे हि दो मनस्ये उपायासे दुःखोतिना दुःख परेता अपने नामिमस्य केवलस्य दुःख कंदस्य अंत क्रिया पैया ये आती चिर परिनिब्बुतम अपि भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं यथा सति बलं मनसि करोम अनुपटिपजाम सा सानोपटिपत्ति इमस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य अंतिक्रियाय संबद्धतु याद हो दिया ये
बार बोला था तेरे ऐसी नहीं जा रही, जोर बोला तो ऐसी जा रही। Connected to 6B77382D. So we'll listen to chanting of Dampada, chapter 11, Jarabanga. Konuhaso kimanando niccang panjalite sati andhakarena onadha padipanna gavessata passa citta katang bimbang arukayang samussitang aturang bahu sangkappang yasanathe duang titi parijinna midang rupang roga nidhang pabhangurang bhijjati puti sandeho maranang tanghi jivitang yani mani apathani alapuni vasarade kapotakani atheni tani deswana karati athenang nagarang katang mansalohita lepanang yatha jaracha machucha mano makhocha ohito jirang tive rajaratha sucitta atho sarirang pijarang upeti satang ca dhammo najarang upeti santo have sabbhe pavetayanti appasutayang puriso balivaddo vajirati mansani tassa vadhanti panyatassana vadhati aneka jati sangsarang sandhavisang anibbisang gahakarakang gavesantu dukkha jati punappunang gahakaraka tiddhosi punagehang nakahasi sabbate phasuka bhagga gahakutang visankhitang visankhara gatang cittang tanhanang khaya majjaga acaritva brahmacariyang aladhayuppanedhanang jinna koncava jayanti kena macceva pallale acaritva brahmacariyang
අලද්ධායොපනේ ධනං සෙන්ති චාපාති කීනාව පුරාණානි අනුත්තුනං සාධු साधु साधु। अब इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। हाँ पता चल रहा या एक ही पढ़े। पूर्णहासो किमानन्दो चम्पजलिते सती अन्धकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेशत पश्चित्कतं बिम्बम्। इसका हिंदी पढ़ना सारे इकट्ठे बाद में पढ़े। नहीं ऐसे थोड़ा पढ़ते हैं। आप नहीं तो पढ़ा था। कुछ फायदा क्या होगा, पहले पढ़ चुके हैं। क्या हंसी क्या आनंद जब जल रहा भीतर अविराम, अंधकार से घिरे तुम क्यों न ढूंढते चिराग। असचित कतम बिंबम अरुकायम समुसितम आतुरं बहुसंकल्पं यस्नति ध्रुवं ठिति। देखो यह चित्रीकृत बिंब शरीर जिसकी इतनी अध्रुव स्थिति, भरा घावों से फूला रोगग्रस्त, फिर भी नाना संकल्पों से युक्त। परिजिन्नमिदं रूपं रोगनीठं पवंगुरं भिज्यति पूतिसन्दहो मरणन्तं हि जीवितम्। यह शरीर है जीर्ण शीर्ण, रोगों का घर, भंगुर न अनंत। यह दुर्गंध पूर्ण शरीर होता विघटित सचमुच जीवन है मरणांत। यानी मानी अपत्थानि आलबुनीव सारदे कापोतकानि अटठीनि तानि दिस्वान कारती। फेंकी हुई शरद काल की अपत्य लौकी की भांति सफेद इन फेंकी हुई हड्डियों को देख कैसी इस शरीर से आ सकती। अटठीनम नगरम कतम मंसलो हितलीपनम यथ जरा चमचूच मानो मक्खोच ओहितो। हड्डियों का एक नगर बनाया, मांस रक्त से लीप, जरा मृत्यु अभिमान डाह जिसमें जा छिपे। जीरन्ति वे राजरथा सुचिता अथो शरीरं पिजरम उपेति सतं च धम्मो नजरम उपेति संतो हवे सत्ति पवेदयन्ति। सुंदर राज रच भी होते जर्जरित, यह शरीर भी होता जीर्ण। सत्पुरुष आपस में कहते संतों के सद्गुण न होते क्षीण।
सुतायं पुरिसो बलिवद्दो जीरति मनसानि तस्य वर्धन्ति पन्यातस्य न वर्धति। अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति होता जीर्ण, उसका मांस ही बढ़ता जबकि प्रज्ञा रहती क्षीण। अनेक जाति संसारम संधाविसम अनेबिसम गहकारम गवीसंतो दुःखा जाति पुनः पुनम। अनेक जन्मों तक दौड़ता रहा संसार में लगातार, घर निर्माता खोजता पर दुख में जन्म लेता रहा बारंबार। गहकारक दिठोसी पुनगेहम नकाहसी सब बातें फासुका भग्गा गहकूटम विसंकतम विसंहारगतम चित्तम तणहानम खयमज्जगा। घर निर्माता तुझे देख लिया, पुनः घर न कर सकता सृष्ट। कड़ियां सब तोड़ दी मैंने, शिखर स्तंभ भी किया नष्ट। संस्कार रहित चित्त अब मेरा, सभी तृष्णाएं हुई विनष्ट। अचरित्वा ब्रह्मचर्यम् अलद्धायो बने धनम जीर्णकूचावजायन्ति क्षीणमच्छेव पल्लली। जिन्होंने न तो किया ब्रह्मचर्य पालन, न ही कमाया धन यौवन में, मुरझाती जैसी जीर्ण क्रौंच पक्षी मत्स्यहीन जलाशय में। अचरित्वा ब्रह्मचर्यम् अलद्धा यौवनेदनम् सीन्ति च पतिक्षीणाव पुराणानि अनुत्थुनम्। जिन्होंने न तो किया ब्रह्मचर्य पालन, न ही कमाया धन यौवन में, पड़े रहते जीर्ण धनुष समान अतीत कुरेदते कराहते। साधु साधु। Now we'll meditate for 45 minutes and listen during meditation to a short reflection by Ajahn Amaro given last month on Anicca Sanya. The future is always the unknown. Whether it's our personal concern, how this next couple of weeks, the last 2 weeks of the winter retreat is going to be, the period of group practice, whether it's concern about the welfare of people around the world, the coronavirus spreading rapidly, destructively.
concern for our own families, our own interests, responsibilities. The future is unknown. So the thinking mind reacts to that. It fills the future as an idea, fills it with plans, worries, imagination. When the unknown is met with an attitude of self-view, then the experience in the heart is that of fear or threat. We try to fill up the unknown with a belief, a plan, a list of things to do, worries, just undefined feelings of dread. Fill it up with something, just to make that unknown to be some kind of a known. To follow the Buddha's path, to train the heart to transcend dukkha, to be genuinely in tune with its own reality, the reality of Dhamma, nature, then there's a different way of relating to that unknown. It's still mysterious, still no knowledge of what's going to happen, how it's going to be, how our mind is going to be, our body, the people around us, the world. It's still unknown, but when that unknown is acknowledged, received, free of self-view, then there's a different quality to it. It's recognized that things have always been unknown, uncertain. And the fact that we have had plans or intentions, things that we've followed through, or things we've had a sense of control over, that control was always partial, incomplete. A feeling of me being in charge, being in command of my life. I decide what I do, where I go. That feeling of being in control could only ever have been relative, partial, dependent. So things have always been uncertain. No thing has ever really been under our control. Individual choices can have some kind of an effect. It's predictable in some ways. But the Buddha's teaching points to the fact that there's no personal control over the way nature is. The ego is not in command. Self-view is not in command. It's not the controller, not the owner. It's always been the case. So at times like this, where there's epidemic spreading around the world, and we might feel like we're losing control, or things are out of control. Something terrible has gone wrong. It's all different. But if we reflect on the Buddha's teaching, reflect on our life, it's always been this way. There's always been uncertainty. In the 5 subjects for frequent recollection, the Buddha is encouraging us to bring attention to this very thing every day. I am of the nature to age. I am of the nature to sicken. I am of the nature to die. All that is mine, beloved and pleasing, will become otherwise, will become separated from me. I'm the owner of my karma, heir to my karma, born of my karma, related to my karma, abide, supported by my karma. Whatever karma I shall do, for good or for ill, of that I will be the heir. So all along the Buddha has been encouraging us to look, to really appreciate this fragile, dependent nature of the living system, the natural world.
Now the Buddha was not encouraging that to make us feel more anxious or because he was cruel. He was not trying to encourage a kind of negative or depressive attitude. That would be crazy. Of course he wasn't. What the Buddha is trying to do is to help the heart to awaken to the nature of things and to see things, to know the world of things. This body, this mind, the world around us, from an utterly realistic perspective. To see things in their true light. To see things in tune with Dhamma, with reality. So this encourages us to turn towards that uncertainty, to acknowledge it, appreciate it, cultivate it, to remind ourselves of that moment by moment. And if waves of anxiety or fear or agitation arise, that's a sign that's coming from self-view, coming from the habits of identification, attachment. So this isn't making us foolish or insensitive or uncaring, but what it does, when the heart truly appreciates this body is of the nature to age, to sicken, to die, then it is able to attune to each moment, the reality of each day, each hour, each moment, each minute. And out of that attunement, that bringing the heart into a harmonious and clear, integrated relationship to the sense world, what is seen, heard, smelled, tasted, touched, thought. Then, out of that attunement, then the heart can respond. We take care of our own health, we take care of the health of others, we do what we can do, what we can't do, we leave alone. So at this time, both supporting the quality of our retreat, this last 2 weeks of the winter retreat, also supporting the human family, the people all around the world, now in states of agitation, anxiety, illness, people dying. There are thousands of people around the world losing their lives to this illness. To turn towards that, to bring that quality of the anicca sanya, the perception of uncertainty, impermanence, to turn towards it, open the heart to it. In this way, it reveals where the mind has become dependent. The things it has assumed are permanent, or are certain, are our rights, or our feeling of how things should be. Consciously reflecting on anicca, developing the anicca sanya, it reveals those presumptions the mind makes about what we can depend on in the material world, or how things should be, the way governments should be, the way people should be, the way the economy should be. It reveals those presumptions, those attitudes, and dissolves them. Why should that be true? Why was I thinking that? How could that be something that is really under control? And in that appreciation, developing the anicca sanya, then that open heart, that receptivity towards the quality of change, uncertainty, then there's a peacefulness, there's a clarity. It's like coming out of a dream. Of course. How could it be that way?
What was I thinking of? Why did I assume that was something to be relied on, or to be permanent, or to be according to my preferences? Oh, how could that be? So it might be challenging to the ego, challenging to our preferences, but it's liberating to the heart. There's a peacefulness, an ease in the heart. Like coming out of a dream, waking up, oh, it was just a dream. The presence of reality is the great refreshment, the great peace. And from that basis of peacefulness, that basis of attunement to reality, then we can act with greater skill. If something needs to be done, then we do it. If nothing can be done, we leave it alone. That quality of integration, attunement, gives rise to skillful behavior. The awake mind, the Buddha mind, attuning to the way things are, to the Dhamma, gives rise to the Sangha, wholesome conduct. That's how it works. So as our period of group practice for this last 2 weeks of the retreat period gets underway, particularly in relationship to the epidemic of the COVID-19 coronavirus and all the precautions that we have been putting into place, but also in terms of your own judgments, your own opinions, your own fears, plans, to keep bringing that quality of reflection, investigation, developing the anicca sanya around your own opinions. Somebody expresses some idea or some news about a wonderful cure or a special treatment, or we should do it this way, we shouldn't do it that way. This is the wrong way, we should do it that way. I read this article, it said, and so on and so forth. Reflect upon the anicca, the uncertainty of your own opinions. Feelings of rightness and wrongness. Should be this way, shouldn't be that way. To recognize this is an opinion. It arises, takes its shape, passes away. This is a feeling, a perspective. It arises, takes shape, passes away. And once again, it doesn't mean that we suppress all thought, or we don't use our minds to reflect, to consider. But it's learning to see opinions, reactions, emotions in their true light. Seeing them in perspective. Reactions of liking and disliking, approving, disapproving, hope and fear. If that light of wisdom, developing the anicca sanya, is brought to those, then we find the heart no longer imprisoned or burdened by opinions and emotions and fears and hopes. It's not burdened by them, not stressed by them, not limited by them. So this is a simple tool to use, developing the perception of anicca, learning to see things as uncertain. Just a question, is that so? Is that a sure thing? Is that the whole story? Steadily, consistently, developing that way of seeing, of inquiring, reflecting. Look at the results that come from that. See how the heart is free, unburdened. See that for yourself. Know that directly. Don't have to take anyone's word for it. It can be known, seen, felt.
immediately, directly, in your own mind, in your own heart. So I strongly encourage this as a focus for our practice during this time, and to see the results that come from that, to see how more effectively we can live, we can practice, we can work. That's what it is. Don't mute yourself.
टाइम होना। अब 4 ब्रह्म विहारों का अभ्यास करेंगे। पहले मैत्री, रोज़ की तरह पहले अपने प्रति, फिर प्रियजनों के प्रति, फिर आरक्षण करने वाले देवताओं के प्रति और फिर समस्त प्राणियों के प्रति कोशिश करेंगे उसमें उनको भी इंक्लूड करने की जिनके प्रति हमारे मन में कोई द्वेष है, कोई रिजेंटमेंट है, कोई नाराज़गी है, चाहे किसी भी कारण से हो, ताकि हमारा मन मलिन न रहे। ये सारे ब्रह्म विहार हम अपनी मन को शुद्धता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कहीं ये भ्रम न रहे कि इससे दूसरों का लाभ कितना हो रहा है नहीं हो रहा है। शुभकामना है, जितनी शुद्ध हृदय से करेंगे उतना हमें ही लाभ होगा और वातावरण में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अहंगवीरोमि अव्यापञ्जोमि अनिगोमि सुखी अत्तानं परिहरामि। मम माता पितु आचार्या च ज्ञातिमित्ता च सब्रह्मचारिणो च अविरावन्तु अव्यापञ्जावन्तु अनिगावन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। रखा देवता, भूमट्ठा देवता, रुखट्ठा देवता, आकाशट्ठा देवता, अविराहोन्तु अव्यापञ्चाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु।
Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe pungala, sabbe yatta bhav pariyapanna, sabba ityo, sabbe purisa, sabbe arya, sabbe anarya, sabbe deva, sabbe manusya, sabbe vinipatika, avira hontu, avyapajja hontu, aniga hontu, sukhiyatanang pariharantu. अब करुणा ब्रह्म विहार, सभी लोगों को याद करके जिनके बारे में या तो हम स्वयं जानते हो या सुना हो या देखा हो कि इस समय कष्ट में हैं, दुखी हैं, किसी भी कारण से हो, रोग के कारण, परिस्थितियों के अप्रिय होने के कारण, प्रियजनों के विछोह के कारण, घर में बंद होने के कारण, व्यवसाय के बंद होने के कारण, किसी भी कारण से उन सभी के प्रति करुणा का भाव। करुणा सामान्यता कहा जाता है, इट शुड मैनिफेस्ट इन एक्शन। बाकी तीन ब्रह्म विहार मन के स्तर पे प्रभावी होते हैं, करुणा कार्यान्वित करने पे प्रभावी होती है, परंतु हम सभी स्वयं बंधे हुए हैं, तो शुद्ध चित्त से सबके लिए शुभकामना करें। हम सब जितने भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उन सब का दुख दूर हो, कष्ट दूर हो, रोग दूर हो, रोग का उपचार जल्दी मिल सके ताकि और रोग न बढ़े, लोग अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए। Sambhitiya vivajantu sukho rogo vinasatu mate bhavatu antara yu sukhi vigayuko bhavat Sukhi Digayuko Bhavat Sukhi Digayuko Bhavat। अब उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, उन जाने अनजाने लोगों के प्रति जो इस विषम परिस्थिति में रोगियों की सेवा में लगे हैं, आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में लगे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगे हुए हैं, उन सब के प्रति आभार। उन सब के साथ आए हम अपने पुण्य साझा करें ताकि वो सुरक्षित रहें, कष्ट में न पड़ें, स्वस्थ रहें। पुण्यस्य इदानि याना अन्यानि कतानि मे ते संच भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानका।
मुदिता ब्रह्म विहार। जो लोग इस समय अपने कर्मों के राइप होने के कारण सुख की परिस्थिति में प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, घर में खुशी है किसी भी कारण से, या रोग से मुक्त हो गए हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, प्रसन्न हैं, उन सब की प्रसन्नता में शामिल होते हैं। सबका सुख संपत्ति बनी रहे, कोई कष्ट ना आए, कोई बाधा ना आए, ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। यथा लब्धा संपत्तितो मा विगच्छन्तु। अब बेखा ब्रह्म विहार। चाहे हम दुख में हों, सुख में हों, मन की समता बनी रहे। किसी भी कारण से दुख हो या किसी कारण से सुख हो, क्योंकि जब मन की समता बनी रहेगी तभी सती पन्या उपलब्ध रहेगी और हमसे कुशल काम होंगे। वरना चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, समता अगर टूट जाए तो अकुशल काम होने का पूरी संभावना रहती है। तो सभी प्राणी, हम सब समता में बने रहें। चाहे इस समय कैसी भी परिस्थिति हो, मन समता में बना रहे ताकि उपयुक्त रिस्पांस हम दे सकें। उसके लिए भगवान की वाणी ये समझें कि हमारे कष्ट, हमारे सुख दुख सब हमारे ही कर्मों का फल है। किसी और को उसका दोष न दें, अपने दुखों का दोष किसी दूसरों को न दें, और इससे प्रेरित हों कि हम कुशल कर्म ही करेंगे आगे भी। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं पापकम्म तस्य दायादा भविष्यन्ति। और समता का भाव बने रहने के लिए सम्यक दृष्टि, सती और पन्या बनी रहे हमारी। हम निरंतर अभ्यासरत रहें, सबकी सुख की कामना, उनकी दृष्टि सम्यक रहे, इसके साथ समाप्त करेंगे। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमः, मा किञ्चित् दुःखमागमः, मा किञ्चित् सुखमागमः। सभी की दृष्टि ठीक हो ताकि कोई गलत काम न करें। नासमझी के कारण रोग बढ़ाने के कारण न बने। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें, उसमें डॉक्टरों पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार न करें। ये सब मिथ्या दृष्टि के कारण ही होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि बनी रहे, ये भाव
अपने लिए भी और सबके लिए बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी अकुशल कर्मों से बच पाएंगे। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु मे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। सद्गतो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। में सामान पता ना